मुझे कोई दिक्कत है शुरू में. Yeah. So the recording started. So very good morning to all of you students. So we are going to have a journey of this motion in a straight line, okay, without any deviation for the next 70 to 80 minutes. So let us enjoy this journey together. So though you are very much aware of this motion chapter in class 9th, so already I have discussed with you some of the points or some of the terms which are involved in this motion chapter. But now systematically through one PPT also, we are going to revise many things which are basic, and class 9th all material I have already shared with you. So one this small PPT which is made by one of my student, that I am sharing with you just to show you this one dimension motion, two dimension and three dimension. So that just I wanted to show you, and with this we will start our class. Okay, and this also I will share with you after the class, no doubt. But let us start with this. Okay. Yeah. So are you able to see this screen now? One dimensional motion, it is written here. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us recap everything what we know. I told you with the help of this beautiful PPT made by the student. Okay. So this one dimension motion. So already you know that this is rest, and these plants, this house is at rest with respect to any other thing. So as rest and motion, we have studied that these are relative terms. So this is rest. Okay. A body is said to be rest if its position does not change with respect to. So with respect to word is very, very important, or with reference to. With reference to its surroundings, with the time. With the time, its position is not changing. Then we can say that they are at rest. Suppose two friends are going in a bus. Okay, so they can be considered at rest with respect to each other because their positions are not changing. Yes, but they are in motion with respect to outside trees and other things, because their motion, their position is changing. Earlier they were at suppose 10-meter distance from particular tree. Now after some time they are 20-meter. Then they are at a 30-meter, like that. That if the bus is moving ahead. So that way, this rest is a very, very beautiful, but it is a very, very reference term. It is not an absolute term, but it is a what relative term which say. Similarly, motion is also same thing. Okay, we can't say that motion. See. This car is moving and coming here. So when we will say that it is in motion, a body is said to be in motion if position changes with respect to surrounding. So see, surrounding में क्या है? Here they have shown one tree and they have shown one house. Okay, or I think it is a school maybe. So yeah. So if the motor came. So motor came closer to the tree, and then it was far, then its distance was decreasing. So its position was changing with respect to tree and with respect to that school. So we can say that it is in motion. That particular car is in motion with respect to the surrounding. Okay, so these are these relative terms which we have studied in long back in 9th class. Okay, so that only is all those things are there. I explained you already. So these things are there. So yeah, relative motion and all that. Animation, with respect to animation also we can see all those things. So this point object, when we call the object is point object, already I told you that if the distance traveled by that object is very, very large compared to its own size of an object, then we call it a very, very point object. So all these things you can write and point. This point object, what is point object? This point, it should come in your notes immediately. Now, as I told you, this is a very important term, frame of reference. Okay,
So this frame of reference always is play a very important role to show a position of any object. So see here, object P, you have studied in coordinate geometry also this thing. So last year also you must have seen here. So this point P, okay, and this is this x-axis, y-axis, and z-axis is shown, and they are intersecting at point O. This coordinates of O considered as 0, 0, 0. Okay, so x coordinate is 0, y coordinate is 0, and z coordinate is 0. And with respect to this origin, the point P, location of P is this given. So what is the distance? So first of all, we will have to go x distance on x-axis, then y distance we will have to travel on y-axis, and then definitely z distance on z-axis you will have to move to approach or to reach this point P. So the coordinates of this point are called as what x, y, z. That means on x-axis the person might have traveled from here to here. See, x, ये x distance उसने travel किया होगा, फिर उसने y distance travel किया होगा ऐसे करके, है ना, ऐसे करके वो y distance travel किया होगा, और फिर उसने z distance ऐसे करके travel किया होगा, कुछ तो भी है ना, ऐसा करके, तो तब वो जा करके इस point पर पहुंचा है. हाँ, थोड़ा सा और ऊपर ले जाना पड़ेगा हमको, और फिर उसने along z axis ऐसा distance travel किया होगा to reach this point, है ना. So this, its location can be shown with this. Okay, so to measure position of object we require coordinate system, already I told you. Okay, so there are three perpendicular axes in the frame of reference x, y, z. तो अगर कोई 3 dimension में space पे body है, तो उसको दिखाने के लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितने परपेंडिकुलर एक्सिस लगेंगे? तीन लगेंगे. एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन को हमको वहां से हम मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. और ये पूरी जो है, ये पूरा जो ऑरा है, स्पेस है, उसको हम फ्रेम मानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और रेफरेंस का जो रेफरेंस पॉइंट है, जिसकी रेफरेंस में हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं या पोजीशन मेजर करते हैं, सॉरी, तो उसको हम क्या मानते हैं? उसको ओरिजिन मानते हैं. So for example, the position of P is defined by 3 coordinates x, y, z, already I told. So ये इस तरह से होता है. So if any one of the coordinate of point P change with time, then the body is in motion with respect to the coordinate system. तो अगर if any one of the coordinate of P, मतलब ये point P है यहाँ पर इस स्पेस में, मान लो कहीं तो भी है वो, है ना. अगर एक काइट, ये मान लो काइट आपने उड़ा रहे हो और काइट की बिल्कुल पोजीशन वही है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? वो इट इज एट रेस्ट. लेकिन मान लो वो थोड़ी सी भी इधर चली गई या इधर चली गई या ऊपर चली गई, दाएं बाएं थोड़ी भी चली गई, तो हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम दैट काइट इज इन मोशन. ओके, थोड़ा भी एक कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाता है उसका, है ना, one of the coordinate of this changes, then we say that it is motion, है ना. तो ये बिल्कुल समझने की आपकी बात है. चलिए, I hope it is clear. If any doubt is there, immediately you can ask. Though it is recording is taking place, but yes, if you ask something, your voice will also be recorded and will be can be heard for a long time. Yes. So motion in is of 3 types. So one dimension motion, yes, we are today, we have to focus on one dimension only, but we should know what is 2 dimension and 3 dimension, because that we have to study in our next chapter. So if a body moves in a straight line, you know, then its motion is called a one dimensional motion, a rectilinear motion without deviating left, right, just straight going, you know. And that means only one coordinate of the coordinate system is changing with time. That means either x-axis, suppose a body is there, and if it is going up only, but in one dimension only, y-axis में ही जा रही है, तो भी हम बोलेंगे वो one dimension में. जरूरी नहीं है कि one dimension के लिए उसको horizontally चलना पड़े x direction में. अगर x-axis हमने नीचे लिया है, तो आवश्यक नहीं है कि उसको ऐसे ही चलना है. It can move this way also. It can move this way also.
So in this 3 dimensions, if one of the coordinate is changing with time, then we can say that it is one dimensional motion. ये MCQ में बहुत बार घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा. हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बॉडी कैसे चल रही है ना, ऐसे ऊपर जा रही है. तो many of the student will write that it is a 3 dimensional motion. Okay, if you are thrown if you are thrown a ball vertically upward directly like this, and after going up it is coming down, so which type of motion it is? Which type of motion it is? It has gone up straight way and it has come down. So which type of motion you can consider it? One dimensional motion or 2 dimension or 3 dimensional motion? One dimensional motion. One dimensional motion. Why? Because it is going in the y-axis and coming back to the origin through the y-axis. Yes, very good, very good. So it has gone up y-axis, मतलब y-axis पे वो आगे बढ़ा, उसने ऊपर गया, तो origin से वो y में plus में चला. Then again it came down only in y-axis only, वापस origin पे आ गया वो, है ना. So it is purely one dimensional motion. So make it clear, है ना. कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए हमको, है ना. Our concept, if our concepts are clear, ना, we will not have any problem in understanding the things. Okay, so if a body moves in a straight line, then its motion is called one dimensional motion. That is, if only one coordinate of the coordinate system changes with time. Okay, so example of one dimension motion of a freely falling body, if there is no wind, already they have given C, है ना. Motion of an aeroplane on a runway पर जा रहा है ना. तो ये हमारा इस टाइप से, ये ट्रैक्टर इज मूविंग सपोज, है ना. many things you can see. One dimensional motion is a though it is not a very common motion. One dimensional motion करना बहुत टेढ़ी खीर होती है ना. हम लोग जब लेफ्ट राइट सीधे भी करके जाते हैं तो वन डायमेंशनल मोशन करते हैं, बट कितना डिफिकल्ट होता है. थोड़ा सा भी इधर नहीं होना है उधर नहीं होना है. सो वन डायमेंशनल मोशन इज नॉट दैट इजी एज टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल तो हम मोशन आसानी से करते हैं जमीन पर, है ना. और 3 डायमेंशनल मोशन भी पक्षियों के लिए बहुत इजी होता है ना. हमारे लिए नहीं होता है उतना आसान, बट फॉर अस 2 डायमेंशनल मोशन इज इजी. ऑल द नॉर्मल डेली लाइफ हमारे जो मोशन होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं जनरली? 4 ऑप्शन आपको आ जाए, है ना. 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, एंड कांट से. सो व्हाट शुड बी योर आंसर? 3 dimensional. Yes. How many dimensional? 3 dimensional. 3 dimensional. हमारे मोशन, हमारे दैनिक जीवन में हमारे 2 dimensional. 2 dimensional बेटा, अभी तो बता दिया मैंने आपको ना. इट इज अ 2 dimensional मोशन. कार चल रही है तो वो 2 dimensional मोशन करेगी. कभी ऐसे जाएगी, उस प्लेन में रहेगी ना, वो इस प्लेन में रहेगी. ये लैपटॉप का प्लेन है ना. कोई आंट है, कोई चींटी है, कोई एनिमल्स हैं. जनरली वी ह्यूमन बीइंग्स वी मूव इन अ 2 dimensional मोशन ओनली. हाँ, कभी ऊपर चल रहे हैं, जैसे बिल्डिंग के ऊपर चल रहे हैं, अब जैसे स्टेयर्स चल रहे हैं तो हमारा 3 डायमेंशनल मोशन हो जाता है. बट जनरल वॉकिंग जो होती है हमारी, वो जनरली 2 डायमेंशनल मोशन होती है ना. 1 डायमेंशनल बहुत कम होती है ना. चलिए, okay, so that is that. But now coming to 2 dimensional motion. So ये देखो, if a body moves in a plane, then its motion is called a 2 dimensional motion. That is, if only any two coordinates of the coordinate system changes with time. So example of 2 dimensional motion of a motion is motion of planets around the sun. Right. अभी बताइए, ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है. शायद बताइएगा. हाँ, आपसे पूछूंगा मैं. So motion of a billiard ball on billiard table and motion of a projectile. Projectile shayad word you are not aware, I don't know. In 11th it will come, but I don't know whether you have heard this word projectile. So if you have heard, then you can elaborate this also. But please elaborate me about the motion of a planets around the sun, how it is considered as the 2 dimensional motion. Why it is not a 3 dimensional motion? क्योंकि वो एक फिक्स ऑर्बिट में चल रही है इसलिए. हाँ, ऑर्बिट में चल रही है, ठीक है. बट ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, ये हमें सिद्ध करना है. वी हैव टू
just prove that okay, it's third coordinate, it is not going in third coordinate. So how it is, ऑर्बिट में मूव कर रही है. So ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट होता है, जैसे मान लो ये सर्कुलर ऑर्बिट है ना, हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कल में मूव कर रहा है कोई भी चीज है ना इसके अराउंड, है ना, तो ये एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, इसको प्लेन बदलने की जरूरत नहीं है. ये मान लो ये हमारा सन है ना, सन के अराउंड ये इस प्लेनेट इस तरह से ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है और एक वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है. अगर एक्स और वाई मानते हैं हम लोग है ना इसको, तो इसका एक्स और वाई ही बदल रहा है. ये कभी भी इस तरफ नहीं आ रहा है, वो ऐसे 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 ही मूव कर रहा है. हो सकता है वो इस तरह से मोशन कर रहा हो, ऐसा एग्जैक्टली ऊपर नहीं कर रहा है या एग्जैक्टली ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है वो, बट ऑल द टाइम इट इज मूविंग इन दिस वे ओनली. इट इज नॉट चेंजिंग आइदर दिस वे, ऐसा लहरा नहीं रहा है, वो लहरा नहीं रहा है ना. तो that's why it's only two coordinates only changing when it is moving in a circular orbit or elliptical orbit. Okay, almost it is a circular orbit, but slightly elliptical orbit it is moving. So it is moving in a two dimension. That's why we say that. Okay. तो बाकी चीजें तो आप समझ सकते हो, बिलियर्ड बॉल है, कैरम की गोटियां हैं, ये सब टू डायमेंशनल मोशन करती है, कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, तो ये सब ठीक है. प्रोजेक्टाइल शायद आप लोग को, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस नेम और नॉट, बट वी विल बी टैकलिंग इन दैट नेक्स्ट चैप्टर. तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और वो कैसे टू डायमेंशनल हो गया. किसी को पता है तो ही और शी कैन एलाबोरेट इट, अदरवाइज वी विल मूव अहेड एंड एक्सप्लेन. अजून चहा बनव राहिला. यस बोलिए. हाँ, जिसको नहीं बोलना है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए ना, यू प्लीज ऑफ योर माइक, अदरवाइज ना अननेसेसरी अदर नॉइसेस आर कमिंग. ओके, एनीवे चलिए. So three-dimensional motion. So if a body moves in a space, then in a space, but conditional. अभी ये भी तो स्पेस में मूव कर रहा था, कौन, हमारा planet. It is also moving in a space. So moving in a space is not the only condition for a body to have a three-dimensional motion. Okay. So if a body moves in a space, then its motion is called a three-dimensional motion. ये थोड़ा सा हमारा इसको थोड़ा सा कंडीशन लगा देंगे, एंड इट्स ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. बिकॉज अभी भी हमने बॉल को ऊपर भेजा था और वो बॉल नीचे आ गई थी, तो स्पेस में तो गई थी वो, मतलब स्पेस में मतलब एटमॉस्फेयर में गई थी, तो वहां उसका वन डायमेंशनल मोशन था. जबकि प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उसका टू डायमेंशनल मोशन है. तो ओनली दैट मच इज नॉट सफिशिएंट. ओके, सो ये साथ में ये लगाना जरूरी है, इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम change it with time all the three coordinates are changing, then only we can say that it is a three-dimensional motion, right? Okay, so motion of gas molecules, as they are randomly moving. So motion of birds, they will not only restrict themselves in a two dimension, they will move somewhere here ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना, उल्टे सीधे सब जगह. मोशन ऑफ अ काइट also always it is a three dimension, but yes you are holding it one place only for some time, है ना. कभी कभी होता है काइट उड़ाते हैं, हम भी बहुत उड़ाते हैं ना. तो ये मोशन ऑफ अ काइट आई लाइक वेरी मच, है ना, एंड तो ये बहुत अच्छा लगता है. तो ये एनिमेशन भी थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया है, तो या दैट यू कैन सी. सो so this way it is there. You can see this is shown, this point P, it is shown here in a somewhere in the space. Its position can be determined by the three dimensions x, y and z. So now position measurement, all of you know, this is all 9th class only, so I don't want to go into depth of this, but you can if a body is in a one dimension, what x-axis is only one dimension, so measurement to the right of the O is positive and measurement to the left of the O is negative. That is also our assumption, है ना. हमने इसको ओरिजिन माना है जीरो को, तो ये इसके राइट में जो भी होगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, इसके लेफ्ट में जो भी होगा उसको नेगेटिव मानेंगे. लेकिन अगर हम ओरिजिन कहाँ लेते हैं, 10 पे लेते हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही 10 है, तो 10 के राइट में जो आएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, 10 के ओरिजिनल पोजीशन हमारी ये है, तो हम इसको ओरिजिन मान सकते हैं. सो एवरीथिंग इज चेंजेबल, आपको जो मानना है वो मानना है, लेकिन जनरली हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं. हमारा जो भी कार्यक्रम है वो
जीरो से स्टार्ट करते हैं मोशन, तो उसके लिए हम उसको जीरो मानते हैं। बट डोंट बी फ्री माइंड रखना है हमको, है ना, क्योंकि कई बार हमको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करने को मिलेगा, हमें आगे से स्टार्ट करने को मिलेगा, ओरिजिन से पहले से स्टार्ट करने को मिलेगा। सो यू शुड बी वेरी मच understand this thing, that what it is this, okay, so that way it is that. So time measurement वगैरह भी इसी तरह से होता है। so we can add a clock to our frame of reference। तो space है, हाँ, और टाइम, तो टाइम और स्पेस साथ में चलते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें क्लॉक भी ऐड कर देते हैं हम लोग की मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ पार्टिकल इट इज नेसेसरी टू चूज सम इंस्टेड ऑफ टाइम एज ओरिजिन। तो हमें कुछ ना कुछ टाइम को तो ओरिजिन मानना पड़ता है। सो दिस इंस्टेंट इज असाइंड जीरो वैल्यू ऑफ टाइम। तो हम शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से तो करनी है, किसी टाइम से। तो जैसे मैंने अभी एक शुरुआत करनी थी मुझे 11:30 से, सो 11:30 जो था मेरा स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए था, बट whether I could start with that? No. I started my class at 11:35. So 11:35 is t is equal to 0 for me. यहां से मेरा कैलकुलेट होगा टाइम ऑफ टीचिंग। So if I go from 11:35 to 12:35, so it is my 1 hour time. I will not record it from 11:30. So किसको मुझे जीरो मानना है वो मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी 11:30 को जीरो नहीं मान सकता, 5 मिनट हमारे वेस्ट हो गए, हमने बच्चों का इंतजार किया, है ना। We were sentimental and we were thinking that yes, students may come, है ना, yes, they are innocent, they may join after some time, there may be some connectivity issue, but later on also they didn't join, some they joined, but later on also many didn't join. So we were late by 5 minutes. Okay, I'm giving just example, don't take it in another way. So we started from where? From 11:35. So our 11:35 is t is equal to 0 for us. Okay, so it is not necessary that t is equal to 0 is the beginning of motion, है ना। तो यहाँ मोशन की बात नहीं है, यहाँ मैं बता रहा हूँ हमारे स्टडी का टाइम की बात है। ऐसे ही मोशन भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम मोशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि t इक्वल टू 0 पर ही हमारा मोशन स्टार्ट हुआ हो। सो इन फैक्ट t इक्वल टू 0 इज द इंस्टेंट एट विच वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। हो सकता है मोशन तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ प्लैनेट, वो तो कब से हो रही है, लेकिन अगर हमें अभी ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हमारे लिए उस मोशन को अभी से स्टार्ट किया, तो हमारे लिए t इक्वल टू 0 अभी से स्टार्ट हो जाएगा 11:30 से, या अभी हो रहे हैं मान लीजिए 11:50, तो 11:50 से हमारा t इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। सो इट दिस वे दिस टाइम will also play a very important role in this understanding the motion. So motion we have to understand with respect to time also, with respect to some references there, but with respect to time also. So distance, displacement, I need not to specify the difference between that, all this with you. So I will just skip. Any doubt is there, you can ask me, okay. So this Indore, Ujjain, all those things they have shown straight way path from Indore to Ujjain. So this is a displacement, and some path other than this shortest route if you follow, then it is a distance traveled. So the actual length of this path will give the distance traveled, but whereas this shortest path between 2 points we are calling at the what a displacement. Okay, so that all you know very well. If you have any doubt, you can ask me. So all these differences I need not to explain. One is a scalar quantity, one is a vector quantity, because displacement require what? In what direction you are going exactly. Okay, so direction is also important and magnitude is also equally important. So as those you are going a straight way. Displacement is very much for our one-dimensional motion. We will be dealing with the displacement mainly, but we should know in what direction we are going. So if our direction is wrong, then definitely we will not reach a right destination, we will reach to a fake end. So direction is very important. So displacement gives us one moral also, that not only magnitude of the length of the path is important, but the direction is also important. हम किस दिशा में चल रहे हैं ये भी बहुत आवश्यक है। हम बहुत मेहनत करते हैं, जीवन में भी हम क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किस दिशा में कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर सही दिशा में करेंगे तो कम समय में भी निश्चित दूरी तक पहुंच जाएंगे, और केवल डिस्टेंस ट्रेवल करते रहेंगे ऐसे ऐसे घूमते घूमते,
तो हम लोग कहीं बराबर नहीं पहुंच पाएंगे, या पहुंचेंगे भी तो बहुत देर बाद पहुंचेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट जब मैं समझाता हूं बच्चों को, तो मैं ये मॉरल भी देना पसंद करता हूं कि हमें डिस्प्लेसमेंट से बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए, टू रीच अप टू अ डेस्टिनेशन उज्जैन फ्रॉम इंदौर, सी डायरेक्शन वाज वेरी मच राइट। दो अगर स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा होता, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन ऐसा होता, तो क्या वो उज्जैन पहुंच पाता? उज्जैन कभी भी नहीं पहुंच पाता, कभी भी पहुंच पाता। स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने में तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस, सॉरी, डायरेक्शन का जरूरत है। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं चल रहा है, वो टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है इधर उधर घूमते हुए, तब तो वो थोड़ा सा यू टर्न लेकर के वापस उज्जैन पहुंच जाएगा। अंडरस्टूड? हेलो, do you Yes, agree sir. with me? But when Yes, you sir. are dealing with the one dimension motion, then the direction plays a very very important role. Otherwise you will not reach to a destination, never infinite time तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि स्लाइटली आपका डायरेक्शन, एंगल बदल गया। इस एंगल से जाना था और इस एंगल से चले गए, तो आप पहुंचना था क्या? जापान पहुंच गए चीन, है ना? समझ गए ना? ऐसा हो जाएगा, है ना? तो ऐसा एक गिद्ध भी है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना? तो ऐसी बात हो जाएगी, हमें पहुंचना कहीं है और हम पहुंच कहीं जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, दो इट इज अ वेरी वेरी शॉर्ट जर्नी, बट एट द सेम टाइम it is a very very dangerous journey if you have not taken the what direction into account. Okay, so that's why it is called a vector quantity, which requires magnitude of that path traveled, but at the same time straight line path traveled, but at the same time what the direction in which we have gone. Okay, so that way it is very very important role it plays in our life. So all those things है ना, आपको पता है ये सब चीजें। सो आई एम स्किपिंग इट, बाकी चीजें मैं जो बताना है, जो की पॉइंट है वो जो बताना है, वो मैं बता के आगे बढ़ रहा हूँ। एनी डाउट इन दिस, यू प्लीज आस्क मी। ओके, या सो as displacement is a very very vector quantity, so if you have gone like this and again you have come back to the same point, displacement says that it is the what final position minus initial position. So your final position is also this, initial position is also this. So so we can say that the displacement is zero, but the distance traveled cannot be zero or cannot be negative, but because the distance traveled means the length of the path you have traveled so far. Suppose आप बचपन से अभी चलना चालू किए, तो कितने किलोमीटर चल लिए होंगे? वो सब ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, हजारों लाखों किलोमीटर चल लिए होंगे। शायद मैं तो आपसे कई गुना ज्यादा चल लिया होगा ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी मस्ट बी मोर, मच मच मोर। तो जैसे जैसे हमारी जिंदगी बीतेगी, आजकल तो हम डिस्टेंस बहुत कम ट्रैवल करते हैं हमारे पैरों से, लेकिन पुराने जमाने में आपके पापा मम्मी और आपके ग्रैंडफादर तो बहुत पैदल चला करते थे। तो distance traveled by them, है ना, by barefoot is much much larger, है ना, than what we will be completing when we will reach at their age. Okay, so distance traveled it will go on adding, है ना, रोज का आपका ऐड होते जाएगा, लेकिन displacement is not like that. So I can go on elaborating this by giving you the practical examples. Okay, but that's why I think it is sufficient for you to I could explain this all to you with the help of this. So may I now just stop the recording of this, because this is one of the lecture